section view, and there are some of the issues that I need to correct. ये सेक्शन व्यू बनाया था हमने और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हमने ठीक करना है। देखिए, जब आप किसी सेक्शन को काटते हैं, ये हॉल था हमारे साथ, राइट, और हमने इस हॉल को काटा था बीच में, और इसका हमें फ्रंट में ये नज़र आ रहा था। फ्रंट में क्या नज़र आ रहा है ये आप देख सकते हैं। अब जो सेक्शन, जो लाइन, ये जो लाइन है कटिंग लाइन, सेक्शन लाइन, इस जिस ये इन आप देख रहे हैं इन बीम्स को काट रहा है और यहाँ पे इन दीवारों को काट रहा है, राइट, इसके बीम के नीचे जो दीवार है, तो उसको आपने इस तरह ब्रिक का नहीं बनाना। ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हुआ है आपका, और इधर से ये भी डिलीट हुआ है। ये आपका सेक्शन, ये कटिंग लाइन में बनेगा, लाइक इट हैज़ बीन कट, तो इसको आप वो डायगोनल लाइन में बनाएंगे। सो वो कैसे हम करते हैं, हैश कमांड से आप इसको ले लो, आप इसका हैश ले लो, एंड यू टेक द हैश ऑफ दिस एज वेल, और आप इसको एंटर करो। जी, जब एंटर कर ले तो इस हैश को आप हैश एडिट में जाओ एंड कम टू, जिसको आप यू कैन गिव इट एनी कलर। आई विल choose, I can choose red and I can choose another one, I can use green either. So yeah, let's select any color and let's do this. Okay, now if you see, uh, it has been, but we need to play with this uh, hatch for a while. So let's increase the scale to 10. Let's see what it gives. And let's make it 10. Let's see. Okay, it's perfect. We can play more with it. इस तरह होता है, इस तरह ये आप नजर आ रहा है, हमें इसको इस तरह करना है। Switch head. अच्छा, that's perfect. Yeah. Okay, that's perfect. Let's make it 20. What does it say? Yeah. Okay, that's perfect. Let's do another thing. Actually, let's see what does it show. Ah, it's perfect. Let me. If you see इसमें हैश में अगर आप देखिए नीचे ब्लैक का बैकग्राउंड, अच्छा, then it's a color. You can also play with it like hash edit. You can take it in a black. You see? Now it's perfect. It shows that this section has been cut right here. Okay, so this has been cut. Yeah. Moreover, okay. Another thing, there is another issue. These columns that you're looking right here, they will be plain columns, right? They shouldn't be made by this concrete. So we're gonna delete this column, but we don't need to delete. We have to edit it. Yeah, they should be solid, because let's see. Yeah, and that's where the color of the column is. They will look plain, okay, because they are not cut, so they need to be, they should be looking like this, क्योंकि इसको ये कॉलम तो कटे हुए नहीं है ना, ये तो आपको नजर आएंगे, तो ये प्लेन में आपको नजर आएंगे। ये अगर कटे होते तो तब आप इसमें कंक्रीट ले सकते थे। जिस तरह ये छत कटी हुई है यहाँ पे, तो इसको हमने कंक्रीट कर लिया। जो चीज़ आप कटी हुई ना हो उसको आप इस तरह लेंगे, प्लेन सॉलिड में आप लें उसको। जो कटी हुई है उसको आप इस तरह, कंक्रीट जैसा कटा हुआ इसको हमने इस तरह लिया है। ये वॉल कटी हुई है, इसको हमने साइड हैश शो किया है। तो सर इसी तरह ये जो दीवार है आपको जो आगे नजर आ रही है, ये वाली,
इस तरह ब्रिक वॉल है। सपोज इसमें पेंट हुआ है और सॉलिड वॉल है, तो इसको भी आप सॉलिड कलर देंगे। अगर ये पेंट हुआ है तो इसको आप बजाइए, आप इसको भी सॉलिड कलर ही देंगे, राइट। सपोज वाइट पेंट है इसका, तो आप इसको इस तरह कलर करेंगे। सी, तो ये एक करेक्शन है उस सेक्शन के वीडियो में जो कि आपको करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।